Good afternoon, everyone. Can someone tell me whether my voice is clear and is this screen clearly visible to all of you? Chalo, theek hai. So welcome to today's session, and today we'll be doing an annual report highlights with respect to specifically RBI Integrated Ombudsman Scheme 2021. Okay, so this is a standalone report. पहली बार report आई है जिसमें integrated data है with respect to ombudsman and the complaints received by the ombudsman with respect to every regulated entity, not solely restricted to banks, not solely restricted to NBFCs, but all the regulated entities that are under the ambit of Integrated Ombudsman Scheme 2021. Okay, so all the data with respect to that has been arrived in this annual report. So we will be touching upon the most important data from the phase 1 perspective, and this is also important from the phase 2 perspective. RBI की report एक data miss नहीं करना है, ठीक है? It's better to understand all the concepts that have been utilized while presenting the data. Okay, and apart from that, obviously we'll be remembering the data as well. So before just jumping out to the data itself, अगर broad understanding अपने दिमाग में बना लेंगे, okay, so it gets easier to remember a huge amount of data that we will be seeing in this. Okay, I'm going to tell you what are the major things that you need to do in this annual report of RBI Integrated Ombudsman Scheme. Okay, you will be receiving data with respect to complaints, okay, basically ombudsman scheme में है क्या? Complaints to banks, okay, and if banks are not fulfilling those complaints, then complaints to ombudsman. Okay, so first of all you will be getting data with respect to these complaints. Okay, फिर इस data में classification आ जाएगा, that means regulated entity wise data, nature of complaint wise categorization, you know, regional or region wise complaints, that which region has been providing, and entity wise complaint giving you which entity is, you know, doing a lot of complaints, which regulated entity is receiving a lot of complaints, what type of complaints are getting to these entities, and from which region the complaints are mostly coming from. ठीक है, तो ये डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, इन्हीं के अंदर डेटा हम लोग ने याद करना है. Then after receiving complaints, what happens? The primary thing is that whether these complaints are getting disposed or not. So it is important for us to remember disposal rate, isn't it? That after, you know, in terms of receiving how many complaints by these regulated entities, how many complaints are these entities resolving or disposing? So that will be a very important factor. Then we will be discussing about turnaround time. Which is like how much time it is taken by these regulated entities on an average basis in order to dispose of these complaints. Okay. And then we will also talk about conversion ratio. Okay. And in this conversion ratio, we will be talking about that how much complaints are getting converted into, you know, or that means complaints from regulated entities are going towards ombudsman. That we will be discussing. But at least this framework, you know, please make this framework in your mind so that at least you know where to put what type of data, so that it is easier to, you know, even remember that type of data as well. So this is with respect to the data and facts that we will be discussing, but apart from that, there are various issues and there are various initiatives that have been launched by the government or by the Reserve Bank of India within the time period of 2022 and 2023, in which how much initiatives
with respect to awareness initiative that they have taken with respect to Ombudsman? Is there any committee that have been constituted within this time period? Okay, those things we will all be discussing in this annual report. So is this clear to everyone how to utilize the amount of data, the huge amount of data that you will be receiving over here? Any confusion? Okay, so let's start with the basics. First of all, understand the timeline for which this report has been published. Okay, so the complaints that have been received from 1st April 22 until 31st March 23 has been collected under this annual report. Okay, so this is an important thing, please remember. Then a little bit about this annual report. Okay, so this is the first standalone annual report. Okay, it highlights activities of 22 offices of RBI Ombudsman, Centralized Receipt and Processing Center and Contact Center. Okay, so but before going further, even though this annual report consists the data collected by complaints, data collected regarding complaints by these offices are about 22, but currently how many of you guys know about that, how many offices of RBI Ombudsman are there right now, as of now? As of now कितने offices हैं RBI Ombudsman के? Anyone? क्या एक 22 तो मैंने ही बता दिए हैं, not 31. Currently, if you see the annual report, you will realize that even though the data is collected for 22 entities, but there are right now 24 RBI Ombudsman offices right now to have been increased. Okay, तो confuse मत होना कि annual report में 22 भी बोल रखा है, 24 भी बोल रखा है, 22 के बारे में data collected है right now. 24 ombudsmen are there. Okay, so this is the first conclusion. A little bit history of integrated ombudsman scheme. So why the name integrated ombudsman scheme? Because previously the ombudsman scheme was isolated. Banks had their own ombudsman scheme, NBFCs had their own ombudsman scheme. Similarly, but RBI in 2021 integrated all these ombudsman scheme into a single integrated scheme, in which this scheme provided for banking related complaints also, NBFCs and even digital transactions. Okay, so it is important that we remember that when these individual schemes were launched, bank was launched in 2006, 2018 NBFCs and 2019 digital transactions. ठीक है, ये जितने भी मैं आपको हाईलाइट करते जा रहा हूँ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. Please make sure that you do not miss these things. How many offices and all those things. चंडीगढ़ वाला यही है, Centralized Receipt and Processing Center. Okay. So with respect to this scheme, what regulated entities are covered, against which you can complain about? So initially when this scheme was launched in 2021, in an integrated manner, these many entities were covered. Commercial banks, regional rural banks, scheduled primary urban cooperative banks, even non-scheduled primary urban cooperative banks with deposit size of 50 crores and above, non-banking, non-financial companies,
excluding housing finance with asset size of 100 crores and above, payment system participants. Okay? And in 2022, September 1st, even credit information companies have also been included under the Ombudsman scheme. If you have any complaint with respect to CICs as well, then you can also put your complaint in this Ombudsman, against Ombudsman as well. Okay? Now we will discuss a little bit brief about the whole summarized form of data overall, and then we will go into the specifics as well. Okay? तो अगर आप overall देखोगे, what has been the situation with respect to complaints that the entities received in the whole year from 1st April to 31st March. More than 7 lakhs complaints have been received by these entities. 7,03,544 complaints received at offices of Reserve Bank of India Ombudsman. ठीक है? Centralized RPC. Both these entities in combined overall received 7,03,544 complaints. ठीक है? And if you look at the data, this is a 68.24% increase over the previous year. So 68% complaints increase कर गई. That is a huge amount of percentage in terms of complaint increase. Okay? Please remember this data as well. And if we look at out of all the total complaints received, 2,34,690 handled by 22 offices of Ombudsman. The CRPC closed 4,68,270 complaints. Okay? And these are non-complaints, non-maintainable complaints. So the thing which we want to understand is that what is non-maintainable complaints? You all must have heard about while learning about the circular of Ombudsman that there is this maintainable complaints and non-maintainable complaints. प्रॉपर्टी में बता देता हूँ, नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट्स RBI कहता है कि we will not accept these complaints, we will not take any action on these complaints, but these complaints we will take action upon. This data is important for both phases. Shubham. Okay? So at least you understand that non-maintainable complaints RBI is not obliged to, or RBI Ombudsman is not obliged to take action upon. Okay, when you see the circular, RBI specifically mentions about that these complaints, okay, if they are arriving on the basis of these reasons, they will be concluded as non-maintainable complaints. Okay, and RBI will not take any action on that. So what are the various reasons? So pehla primary reason the RBI gave in context of this is that if the complainant hasn't placed the complaint on the regulated entity first, और वो directly हमारे पास आ गया है, तो that will be considered as a non-maintainable complaint. We will not take any action. आप पहले regulated entity के पास जाइए, फिर हमारे पास आइए, अगर वो solve ना करे, then we will take. ठीक है? तो अगर आप कोई directly आ चुका है, so that will be considered as a non-maintainable complaint. Okay? So similar type of various rules and regulations are being provided. ठीक है? Exclusion criteria जैसे PM किसान में था, इसी तरीके से exclusion criteria with respect to complaints have been provided, which are termed as non-maintainable complaints. ठीक है? तो at least have a basic understanding कि RBI is not obliged to act upon these complaints. Is this clear? So that's why you could see that CRPC closed these many complaints by telling it as a non-complaint or non-maintainable complaints. ठीक है? इनको कर दिया close और बाकियों को किया handle. Next, important data that around 85.64% of the complaints have been received via
digital modes. Okay, and we will go a little bit deep into it in the later stages when we will see what type of digital modes have been utilized in order to place the complaints to RBI Ombudsman. The primary being is the portal, and the next is obviously email. Okay, all those things are considered as a digital mode of complaint placement. So at least remember this. Next, the most important metric in terms of clearance of these complaints. So the primary thing is the overall disposal rate at offices of RBI Ombudsman is 97.99%. तो अगर 100 कंप्लेंट आती हैं तो 98 कंप्लेंट्स यूजुअली गेट्स रिजॉल्व्ड अंडर दीज ऑफिसेस. ठीक है, और कंप्लेंट्स मोस्टली रिजॉल्व हो ही जाती हैं. इफ यू कैन सी दैट ऑलमोस्ट अगर 7 लाख कंप्लेंट्स आई हैं, 4.5 लाख कंप्लेंट्स तो नॉन मेंटेनेबल बोल के हैज बीन क्लोज्ड. Okay, but it's not like that the RBI is deliberately doing so. They have already provided a exclusion criteria. अगर आप तब भी exclusion criteria में आप complaint place करेंगे तो why would RBI take consideration upon it? ठीक है? So just remember the 97.99% is the overall disposal rate. Average turnaround time, that how much time it takes for regulated entities on an average basis to clear these complaints. 33 days. ठीक है? And it was not like this when the scheme started. In the report it is provided what's the timeline with respect to average turnaround days. ठीक है? अगर वो जब scheme start हुई थी तो it was used to be 95 days to resolve a complaint, but that has been reduced continuously year by year to 33 days right now. Okay, so this is a very important data. 97.99% disposal rate, 33 days average turnaround time. Another thing, कि अगर dispose किया उसके complaint को, तो in what manner those complaints have been disposed of. For example, अगर कोई RBI ना penalty award करी, so all those things is provided to the complainant, or RBI allows complainant and the regulated entity to work it out via mediation, via conciliation and all those things. So that's a different category. And the third thing being the complaint is outrightly rejected क्योंकि उसमें कोई substance नहीं है, तो वो भी तीसरी चीज है. So these are different ways in which the complaint has been disposed of. Okay, which we will discuss later on. But the most amount in which these complaints are disposed of is via फैसिलिटेशन, कंसिलिएशन एंड मीडिएशन. आपस में ही सहमति करके एक कंप्लेंट को निपटा लीजिए. आरबीआई की तरफ से क्या आप पेनल्टी बेयर करेंगे. ओके, सो दिस इज द मोस्ट टॉप मोस्ट वे इन विच द कंप्लेंट हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ. फैसिलिटेशन, मीडिएशन एज वेल एज कंसिलिएशन. ओके, which you can see 57.48% of the complaints are disposed via this method. Okay, but even if the complaints are disposed of by the regulated entities, still अगर लोगों को अपील करना है तो how much appeal has been received? So if you can see, only 122 appeals have been received against RBI Ombudsman decisions. 119 appeals received under current scheme, integrated scheme, and 3 appeals have been received under previous ombudsman schemes. So this is the overall broad data with respect to this annual report. ठीक है, मोटा मोटा तो एग्जीक्यूटिव समरी में यही डेटा है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा. आप एनीवेज इसमें से तो कोई चीज मिस करिएगा मत. ठीक है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, एग्जामिनर अगर उसको इन डेप्थ रिपोर्ट में नहीं जाना है, सो व्हाट दे डू इज दे गो टू एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ इट. ओके, और वहां जो क्रिटिकल डेटा पड़ा हुआ है, दे कैन जस्ट आस्क दैट फ्रॉम यू. ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर दीज डेटा. Okay, so we will continue with the data later on, but before that we'll just look at it that apart from these complaints and the review of these complaints and the manner of these complaints disposal, what are the various steps taken by Reserve Bank of India in order to increase the awareness of RBI Ombudsman scheme, so that people
get more aware of it. People understand their rights and they can do the complaints, and they also understand what are the various proper channels in order to do these complaints. ठीक है, इंटरनल ऑम्बुड्समैन तो बैंक के अंदर आपको सेटअप करना है. ये आरबीआई के सर्कुलर लेक्चर में भी तो पढ़ाया था, इफ यू रिमेंबर. Okay, so what are the other developments under the integrated ombudsman scheme this year? So you can see the first is nationwide intensive awareness program. Okay, so this was launched in November 2022 in collaboration with regulated entities, aimed at reaching excluded isolated populations in tier 3-4 cities as well as rural areas. Okay, while meeting or reaching 3 crore people through physical mode and 25 crore people through digital mode. And this is also a part of executive summary, even though you may find it a generic intensive program, but all these data you never know. एक statement बना के दे देंगे आपको. In context of this, you know, the RBI aims to, you know, reach these many people via digital mode or these many people via physical mode. और fill in the blank question, ESI में पक्का आ जाएगा या फाइनेंस में आ जाएगा या GA में आ जाएगा. ठीक है, तो मेक श्योर यू रिमेंबर दीज क्रिटिकल डेटा. जैसे आप लोग बजट को पढ़ते हो, आरबीआई की सारी रिपोर्ट्स को इसी तरीके से पढ़िए, एटलीस्ट द इंस्टीट्यूशन फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. नेक्स्ट इज दीज आर फ्लैगशिप स्पीक इवेंट्स. जैसे कॉन्फ्रेंसेज होती है, यूजुअली समिट्स होते हैं. सिमिलरली ऑम्बुड्समैन स्पीक इवेंट, second edition held on March 15th on World Consumer Rights Day. So it also becomes an important day to remember. GA में डे वाले न्यूज आते हैं, तो कंज्यूमर राइट डे 2023 का थीम याद कर लेना और 2024 का भी थीम याद करके रखना, क्योंकि March 15 आने ही वाला है. Okay, so it inevitably becomes important. So make sure you remember theme of the World Consumer Right Day of both 23 as well as 24 this year. Okay, second edition of this Ombudsman Speak event happened last year. Okay, and all 22 ombudsmen interacted with local regional multimedia channels. Don't get confused again, I'm saying, even though you are seeing 22 while there are 24 right now, but the data I'm again saying has been taken for 22 ombudsmen previously. ठीक है, तो आपको मोस्टली जिसमें डेटा मिलेगा वो 22 ombudsmen का कलेक्ट किया हुआ है. ठीक है, बट राइट नाउ देयर आर 24. नेक्स्ट इज अवेयरनेस इवेंट्स बाय ombudsman offices. तो 48 town hall events happened and 238 awareness programs were also conducted this year. Okay, focused on obviously what's the main aim of the ombudsman scheme is that grievance redressal mechanism and all those, and how the proper channels can be utilized in order to convey your complaints. Next, another most important committee that was constituted on May 23, 2022 under the chairmanship of BP Kanungo, okay, with respect to reviewing customer service standards in India. Okay, so this committee was constituted in 2022 with respect to reviewing the customer service standards in the country under the chairmanship of BP Kanungo, former Deputy Governor, Reserve Bank of India. Okay, it also submitted its report last year, and right now the reports are being taken into consideration by the Reserve Bank of India, or uske regarding whenever the changes will come, we'll look at it. Next is extension of internal ombudsman scheme, which you guys were asking. Okay, it was rolled out by Reserve Bank of India in 2015. It was mandated for all scheduled commercial banks, excluded RRBs, even extended to NB payment system participants and select NBFCs, and it was it was extended to all credit information companies also when they were included in integrated ombudsman scheme of RBI. ठीक है, इंटरनल ऑम्बुड्समैन हम लोग ने सर्कुलर्स में पढ़ा था दैट एवरी बैंक हैज टू सेट अप एन इंटरनल ऑम्बुड्समैन ऑफिस विद इन देयर ओन ऑफिसेज ओनली, सो दैट आरबीआई ऑम्बुड्समैन के पास ना जाए
बहुत सारी कंप्लेंट्स, तो जो कन्वर्जन रेशियो है बिटवीन कंप्लेंट्स दैट आर नॉट रिजॉल्व्ड एट द बैंक लेवल एंड देन इट इज गोइंग टू आरबीआई, वो थोड़ा और रिड्यूस हो जाए. Just give me a sec. Okay, and next is a little bit details with respect to what type of building the RBI is trying to establish. So project is right now underway about the state of the art contact center to be established at Bhubaneswar and Kochi. Okay. तो कंप्लेंट्स बैंक इंटरनल फिर आरबीआई. यस, आरबीआई ने पहले ही मना कर रखा है ना आपको कि आप मान लीजिए आप एक कंप्लेनेंट हैं, ठीक है, आपको कंप्लेंट करनी है इस बैंक के खिलाफ, तो आपने कहा कि बैंक के पास जाऊंगा, वहाँ मैनेजर से मेरी बनती नहीं है, वहाँ पे कंप्लेंट डालूंगा तो फिर वो रिजेक्ट कर देंगे, तो आई शुड लेट्स डायरेक्टली गो टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, बट आरबीआई ने साफ मना कर रखा है कि आप ऐसे भेजोगे तो मैं आपकी कंप्लेंट को नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट मान के इसको कर दूंगा क्लोज, और आपकी कंप्लेंट कुछ नहीं होगी, एक डेटा पॉइंट बन जाएगी जो हम जैसे लोग रटेंगे. ठीक है, तो इससे बेहतर है कि आप पहले इधर आइए फिर इधर जाइए. अब आरबीआई ने इंटरनल ऑम्बड्समैन स्कीम भी लेके आया जिसमें बैंक इंटरनल ऑम्बड्समैन इस्टेब्लिश करेगा, तो पहले बैंक अपने बेसिक लेवल पे इसको रिजॉल्व कर दे, बेटर है. नहीं तो फिर वो इंटरनल ऑम्बड्समैन के पास जाएगा, वहां भी सॉल्व नहीं हो, देन इट विल गो टू मेन ऑम्बड्समैन. ओके, एंड देन द यूजुअल प्रोसेस, अगर तब भी मन नहीं लगा तो एक और अपील डाल दो, बट होता नहीं है, यूजुअली इट गेट्स रिजॉल्व्ड इन दीज प्रोसेसेस ओनली. ठीक है, now let's move on. So as I was telling you, that state of the art contact center at Bhubaneswar, Kochi and upgradation of the existing contact center at Chandigarh. तो कंप्लेंट्स आपकी कॉन्टैक्ट सेंटर पे नहीं जाती हैं, कंप्लेंट्स या तो आरबीआई के ऑम्बड्समैन ऑफिस जाएंगी या फिर वो सेंट्रलाइज्ड वाले सेंटर पे जाएंगी. कॉन्टैक्ट सेंटर, इफ यू गो टू द कॉन्टैक्ट सेंटर, वो आपको बता देंगे कि आपको कंप्लेंट्स किस किस तरीके से कहां कहां कैसे कैसे भेजनी है, आरबीआई के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है. सो दिस इज व्हाट द कॉन्टैक्ट सेंटर्स यूटिलिटी इज. ओके, तो तीन जगह है, भुवनेश्वर, कोची एंड चंडीगढ़, दैट आर बीइंग टॉक्ड अबाउट राइट नाउ. फ्रॉम नाउ ऑन वी विल बी गोइंग अ लिटिल बिट डीप इनटू द डेटा पॉइंट्स ऑफ द ऑम्बड्समैन स्कीम्स एनुअल रिपोर्ट. ठीक है, यहां आपको कैटेगराइजेशन मिलेगा. ओके, दिस इज व्हाट वी विल गोना डिस्कस. And I'm gonna ask you the data points that we've just now discussed in the executive summary. ठीक है, तो आप मेरे को वो सब बताते चलना. This will make you revise these things also. So first is Ombudsman office wise allocation. ठीक है, कि कौन से Ombudsman office में सबसे ज्यादा complaint आई. Which Ombudsman office received the most amount of complaint? So first of all, tell me how many offices the complaints have been received. कितने ऑफिसेस में कंप्लेंट्स आई हैं ओवरऑल? करेक्ट, 22. ठीक है, टोटल 22 ऑफिसेस राइट नाउ, द एक्टिविटीज ऑफ विच आर बीइंग इंक्लूडेड इन दिस. सो इफ यू सी द मुंबई सेकेंड ऑफिस, सो इफ यू गो टू आरबीआई ऑम्बड्समैन वेबसाइट, आपको 24 ऑफिसेस मिलेंगे. मुंबई में मुंबई 1, मुंबई 2, मुंबई 3, बिकॉज मुंबई हैज अ ह्यूज इट्स लाइक अ प्लेस वेयर ह्यूज नंबर ऑफ कंप्लेंट्स विल कम. तो एक ऑम्बड्समैन ऑफिस विल नॉट बी एबल टू डील विद दिस, सो डिफरेंट ऑम्बड्समैन ऑफिसेस आर देयर. तो मुंबई 2 ऑफिस हैज रिसीव्ड द ह्यूज अमाउंट ऑफ कंप्लेंट्स, 12,330, having 5.25, the highest share in total complaints. ठीक है, then we have Mumbai first, 5.05% of the complaints, then Chennai, Ahmedabad, Kolkata. ठीक है, even though New Delhi have these three different New Delhi 1, New Delhi 2, New Delhi 3, तब भी बस वही है ना कि न्यू दिल्ली के 3 ऑफिसेस कर दिए तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उनका शेयर केवल 3% के आसपास रहता है. दैट्स व्हाई यू डू नॉट सी न्यू दिल्ली
ओवर हियर मोस्टली मुंबई ओनली, ठीक है, और हेड ऑफिस भी यही है, तो नेचुरली यू विल बी रिसीविंग दैट. प्लीज रिमेंबर द शेयर, प्लीज रिमेंबर द ऑफिस एंड द एब्सोल्यूट फिगर एटलीस्ट ऑफ द टॉप मोस्ट, ठीक है. ये भले ही याद, नीचे वाले याद करो मत करो, एटलीस्ट पहले वाले का ये सारे डिटेल्स याद करके रखना. इज दिस क्लियर? And then we have the office receiving the least number of complaints. New Delhi 3. 8474 complaints, 3.61%. Just remember the topmost and the bottommost. Office in terms of collection of complaints. Any confusion in this to anyone? तो पहली categorization हम लोगों ने क्या करी? Office wise. तो let's try to remember these categories and data points as well. ठीक है, लास्ट में याद करने को आसानी रहेगी. ऑफिस वाइज टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट, लास्ट में इसको रिवाइज करेंगे. नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन ऑफ कंप्लेंट्स, दैट विच स्टेट from which the number of complaints are contributed. ठीक है, मतलब कौन से स्टेट से सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं. So you can see top 5 and it is a combined states as well as union territories contributing most to ombudsman complaints. So Chandigarh, NCT, Delhi, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात. ठीक है, अगर आप रिपोर्ट में देखोगे कोई क्रोनोलॉजी नहीं दे रखी है, बट एटलीस्ट दीज 5 स्टेट्स एंड यूटीज आर मेंशन्ड ओवर देयर, तो आप उसको क्रोनोलॉजिकली मत याद करना, बट एटलीस्ट पांचों का नाम याद करके रखना कि दीज वर अमंग द टॉप 5. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द डेटा इज. चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात. चंडीगढ़ कहाँ गया, ये आसपास की, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात. चंडीगढ़ यहीं आसपास ही हैं सारे. ठीक है, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेटा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ज्योग्राफी इज दैट यू रिमेंबर एटलीस्ट कंप्लेंट्स पर लाख अकाउंट्स एज पर मार्च 23 डेटा. अगर आप ऑल इंडिया का एवरेज देखने जाओगे, सो यू विल कम अप विद 6.69 कंप्लेंट्स पर लाख अकाउंट्स. So this is also an important figure to remember, 6.69 lakh. So all India average with respect to per lakh accounts. Okay. So this is another category in terms of region in which we'll be discussing about top 5 states or UTs as well as all India average of complaints per lakh accounts. Next, these are the lowest contributed to ombudsman complaints. Most of the states are from Northeast: Mizoram, Nagaland, Meghalaya, Manipur, Arunachal Pradesh. Not only most, but every state is there. ठीक है, so why do you think the complaints are less? पहली बात तो बैंकिंग पेनिट्रेशन लेस है, अवेयरनेस कम है. मोस्ट प्रोबेबली दीज मस्ट बी द रीजंस. ठीक है, बट जस्ट रिमेंबर दीज 5 नेम्स मेंशन्ड स्पेसिफिकली एज द लोवेस्ट कंट्रीब्यूटर्स ऑफ ombudsman complaints. Next is mode of receipt of complaints at offices of Reserve Bank of India, Ombudsman. तो ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ा ही है. Tell me, digitally, how many complaints have been received? What was the percentage? Everyone, just now we've discussed. Digitally, how much complaints? What percentage of complaints? Is correct, Rishabh. 85.64. ठीक है, डबल डिजिट तक याद करके रखे.
Is correct, Indu. Chalo. Okay. But even if you demarcate and even if you specify this digital mode into different, so you will get complaint portal or via online, email and physical letter. तो अगर आप देखोगे and you know even though this is 2020, 21, 21, 22, 22, 23 डेटा, ठीक है, 22, 23 डेटा मैंने अलग से भी मेंशन कर रखा है, आप यहां से भी पढ़ लेना. बट यू कैन सी मोस्टली वी यूजुअली गेट वाया पोर्टल ऑनलाइन. ठीक है, अगर आप इन दोनों को प्लस कर दोगे यू विल रिसीव 85.7 और अगर स्पेसिफिक जाना है अंटिल 2 फिगर्स 85.64 दैट इज मेंशन्ड ओवर देयर ओनली. ठीक है, 85.64 आप लोग याद करके रखना है, या तो सिंप्लिसिटी के लिए इन लोगों ने एक डेसिमल प्लेस तक याद रखा हुआ है. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम 85.64 यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर 14.36, तो उसको भी याद कर लेना. तो वो तो 100 से माइनस कर लोगे तो you'll get physical letter percentage receipt. Okay, so mode of receipt of payment. ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना क्योंकि मैं आपसे तीनों चीजें पूछूंगा, ओवरऑल नहीं पूछूंगा. इस दिस इज फर्स्ट इज थ्रू पोर्टल, देन वाया ईमेल एंड देन वाया फिजिकल लेटर. एक बार और देख लो सारे के सारे. 56.1 वाया पोर्टल, 29.6 वाया ईमेल. ठीक है, नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ग्रुप वाइज रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट्स. कि पॉपुलेशन में व्हाट एंटिटीज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू complaints. So majority of complaints at RBI Ombudsman offices usually came from metropolitan centers or metropolitan cities. ठीक है, 45.77% of the complaints are from usually metro cities, New Delhi, Bangalore. Okay, then urban areas, then semi-urban centers और last में rural areas. ठीक है, तो मेक श्योर एटलीस्ट यू रिमेंबर अबाउट 45.77% मेट्रो सिटीज और लास्ट का भी एक बार देख लो ना कि बॉटम मोस्ट इज रूरल एरियाज 11.77%. ठीक है, और दिस इज अ नेचुरल. अगर कोई आपसे नॉर्मली भी पूछता है कि बैंकिंग ऑम्बुड्समैन में आपको क्या लगता है कि रूरल एरिया अर्बन एरिया में से कहां से सबसे ज्यादा आएंगे, तो आप लोग आराम से बता सकते हो बिकॉज ऑफ द awareness with respect to these things. तो 45.77 from metro cities, 11.77 from rural. और याद करने में भी आसानी रहेगी, 7 दोनों में डेसिमल प्लेसेस में बाद में. So this is with respect to population group. चलो, so we'll talk about the topmost, we'll talk about the bottommost. नेक्स्ट इज कंप्लेनेंट टाइप वाइज रिसीप्ट ऑफ कंप्लेंट्स. मतलब किस कंप्लेनेंट ने कितनी कंप्लेंट करी इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करी गई है. ठीक है, तो पहले तो देख लें कौन कौन से टाइप के कंप्लेनेंट्स हैं, वो भी तो पता होना चाहिए कि हैं कौन कौन से टाइप के. इवन दो आपको ये सारा डेटा याद नहीं करना है, ठीक है, बस मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड करके रखा हुआ है सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्लेनेंट्स आर. हम लोग एक आध डेटा याद करके रखेंगे जो मैंने स्टेटमेंट में आपको दे रखे हैं. ठीक है, बट इन सब चीजों को याद करके रखिए दैट इंडिविजुअल बिजनेसेस, प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेड कंपनी, ट्रस्ट, एसोसिएशन, government department, PSU, senior citizen, others, all these are entities that do complaint against regulated entities under the integrated ombudsman scheme. ठीक है, and if you look at the data with respect to which complainant as a group accounts for the most amount in context of complaints, so you will realize individual का आप percentage देख लो, बात ही खत्म हो गई. 85.92% in terms of complaint. ठीक है,
मतलब 2,01,646 2,01,646 complaints. 85.92% is from individuals only. ठीक है? So here it is mentioned, even though there is a drop in absolute number of complaints from individuals, that is from 2,43,000 to 2,00,000 only 1,000, the percentage share has increased. अगर आप शेयर देखेंगे 79 से 85 हो गया, even though absolute figure has been declined. Okay, so just remember this. Individual complaints constituted 85.92% and complaints lodged by senior citizens declined to 2.616% of total complaints. ठीक है, so we'll be talking about, एक और ऐड कर लेते हैं, one more category, complainant wise. Now we will be discussing about regulated entity wise. Regulated entities भी बहुत सारी थी, है ना? We had private banks, we had scheduled commercial banks, we had public sector banks, we have UCBs as well. So which regulated entity received how much complaints? So उसका भी data हमारे पास है. तो complaints against public sector banks accounts for highest 43.52% of all the complaints. ठीक है, amounts to 1,02,144 complaints. Whereas complaints against private sector banks accounts for second highest 31.43%, 73,764 complaints. Okay, and overall if you see, अगर broad categorization इनको कर ले, banks, NBFCs, payment सिस्टम ऑपरेटर्स एंड CICs, अगर इन चार ब्रॉड कैटेगरीज को अगर आप कंसिडर करोगे, सो नेचुरली कंप्लेंट अगेंस्ट बैंक्स फॉर्म्ड द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द कंप्लेंट्स, 83.78%. तो प्लीज रिमेंबर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स 43.52%, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बीइंग द सेकंड हाईएस्ट 31.43%. And overall, the banking system as a whole, in terms of receiving complaints under the RBI Ombudsman scheme, 83.78%. ठीक है? तो make sure you remember all these three percentages. और data आपके पास in figure is also over here. So we'll be discussing about regulated entity wise, first, second, overall. Okay, now broad category हम लोगों ने देख ही लिया, but what about within those broad categories of regulated entities, what is the nature of complaints that these entities have received? मतलब कंप्लेंट आई किस डिपार्टमेंट में है? लोन के डिपार्टमेंट में, मोबाइल नेट बैंकिंग के डिपार्टमेंट में आती कहां है कंप्लेंट्स? तो दैट इज देयर. सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट बैंक्स, दीज आर द टॉप 3 कैटेगरीज ऑफ कंप्लेंट्स. सबसे ज्यादा कंप्लेंट आती है मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में, 39,000, अकाउंटिंग फॉर 20.27%. Then we have loans and advances, 20.13%. Deposit accounts related, 17.09%. So you can at least, if not the percentage in these categories, at least आप top 3 categories का नाम याद करके रखिए: mobile banking, loans and advances, and lastly deposit account related. So make sure you remember the categories itself. Then in complaint against NBFCs, the topmost category of complaint is loans and advances and non-adherence to FPC. And what is FPC? First post complaint. वो बेसिकली वही सेम मैकेनिज्म है. रेगुलेटेड एंटिटी के पास ना जाके आप डायरेक्टली RBI के पास जाओगे,
ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्लेंट अगेंस्ट पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स. इन दिस टॉप कैटेगरी इज मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बैंकिंग. ये तो बट ऑब्वियस है, इनका काम ही यही है, इसी में कंप्लेंट आएंगी. लोन्स एंड एडवांसेस, बेसिकली लोन्स के रिगार्डिंग अगर किसी को कोई दिक्कत हो गई, कमीशन आपने एडवर्टीजमेंट में तो दिखा रहा है कमीशन आप रिमूव कर दोगे, बट कमीशन आपने ऑन पेपर रिमूव नहीं करी, इस तरीके से कंप्लेंट्स. एंड देन कंप्लेंट अगेंस्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज इन लोन्स एंड एडवांसेस बीइंग द 72.57%. ठीक है, तो टॉप मोस्ट इनके कैटेगरीज का नाम याद करके रखिए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट. So we have regulated entities category wise, a category of nature of complaint. Next is disposal of complaints, which is the most primary thing. Complaints को dispose कैसे करें? Okay, that these maintained a healthy disposal rate of 97.99% as discussed in the executive summary. Okay, we also notified that significant decline in number of complaints pending beyond 30 days. तो कोई कंप्लेंट 30 दिन के बाद तक यूजुअली रहती नहीं है, अगर कोई रहती भी है तो उनका अमाउंट 0.26% से डिक्लाइन होके 0.04% हो चुका है. तो इट रियली मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटीज यूजुअली डिस्पोज ऑफ द कंप्लेंट्स विद इन द 30 days itself. Okay, then number of complaints brought forward from previous year. ठीक है, 6447. पिछले साल की अनरिजॉल्व कंप्लेंट्स आगे तक कैरी फॉरवर्ड हो गए. दिस इज द नंबर 6447. Okay, so this is disposal related data. Now cost of handling a complaint. कोई भी बैंक कोई भी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही है, इवन दो इट इज रिजॉल्विंग योर कंप्लेंट्स, कॉस्ट तो लगेगा, मैन पावर कॉस्ट या फिर इवन अदर कॉस्ट एज वेल. सो एवरेज कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग अ कंप्लेंट एट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिस हैज बीन रिड्यूस्ड टू 2041 पर कंप्लेंट. ठीक है, विच वॉज अर्लियर 2895 पर कंप्लेंट फॉर 2021-22. तो 2041 रुपए अभी पर कंप्लेंट लगता है इन लोगों का कॉस्ट. एंड रिडक्शन इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड रिसीप्ट ऑफ कंप्लेंट्स ड्यू टू सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर लॉजिंग कंप्लेंट्स. कंप्लेंट रिसीव बढ़ गया. नेक्स्ट इज टर्न अराउंड टाइम, बट उससे पहले इसको लिख लेते हैं. डिस्पोजल एंड कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग, then we have turnaround time for disposal of complaints, which I've already told you has been reduced to 33 days, है ना, which was earlier 95 days in 2019-20. उसके बाद 20-21 में 57 हो गया, 21-22 में 44, and then it is 33 days right now. Turnaround time. And the last is, or the second last is complaint conversion ratio. The complaint conversion ratio basically, if you see the definition of it provided under the annual report, it represents the proportion of complaints received against the concerned bank group at Ombudsman vis-a-vis the total number of complaints received at the respective bank group from their customers. तो basically क्या बोल रहे हैं ये लोग? For example, think about a bank. There are a lot of different customers submitting their complaints. So in 22-23, think about they have received the X amount of complaints, and within this X amount, some percentage of this X amount has been, went to RBI Ombudsman. मतलब यहाँ से resolve नहीं हुई, कुछ percentage Ombudsman के पास चली गई. Let's take it as Y. So complaint conversion ratio is Y by X. ठीक है, तो मान लीजिए अगर 100 है, 20 चली गई, तो रेशियो आपको क्या हो जाएगा? 1/5.
और 20%. Is this clear? इसमें किसी कोई दिक्कत? This is what complaint conversion ratio. And you tell me what type of complaint conversion ratio will be better? Is it better to have higher complaint conversion ratio or lower complaint conversion ratio? लो, बहुत बढ़िया. ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहां पर consistently in public sector banks the conversion ratio is declining, in private sector also it is also declining, foreign banks में भी decline करा but slightly, small finance bank में even though it has increased but scheduled commercial banks or payment banks it has considerably reduced. Okay, and this is the last thing, reasons for closure of complaints under non-maintainable clauses. ठीक है, नॉन मेंटेनेबल में भी आपको मैंने बताया था ना, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेज दैट वी विल कंसिडर इट एज अ नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट. तो उसमें से कौन कौन से रीजंस में कस्टमर्स ने कंप्लेंट करी है? सो द प्राइमरी इज कंप्लेंट पेंडिंग और ऑलरेडी डेल्ट विद एट ओम्बुड्समैन आरबीआई. ठीक है, अगर उन्होंने पहले से डील कर रखी है. देन वी हैव फर्स्ट रिजॉर्ट कंप्लेंट, द मैकेनिज्म व्हिच आई ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड टू यू, बैंक के पास ना जाके डायरेक्टली चले गए. सो दीज टू आर द टॉप मोस्ट categories under which the complaints have been rejected by Reserve Bank of India by calling it as a non-maintainable complaint. Okay, so this is the last thing in terms of reasons for terming a complaint as non-maintainable. तो ये लो, हो गई रिपोर्ट खत्म. इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें करना. दिस इज मोर देन इनफ इफ यू कैन डू दिस. और अभी रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, तो यहीं के यहीं आप लोग रिवाइज करके भी चले जाओ. पढ़ तो लिया ही है, रिवाइज भी कर लो. फिर बाद में जब क्या कहते हैं एग्जाम पास आएगा तो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू एमसीक्यूज विद रिस्पेक्ट टू दीज, तो तब एमसीक्यूज कर लेना. ठीक है, सो रेडी टू रिवाइज. एक बार रफली फिगर देख लेते हैं. चलो, so tell me, in category office wise, what was the top office in terms of receiving complaints? सबसे टॉप मोस्ट ऑफिस कौन सा था? मुंबई 2, करेक्ट. परसेंटेज याद है किसी को? What was the percentage? 5.25%. Very good. What was the bottom most? दिल्ली 6 नहीं, दिल्ली 3. ठीक है, दिल्ली 3 और 3 point something. There was 3.36%. Good. Now let's move on to region wise top 5 state UTs. ये भी बता दो. So the primary thing is चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात. ठीक है, चंडीगढ़, एनसीटी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात. ठीक है, नेक्स्ट, कंप्लेंट पर लैक अकाउंट, हाउ मच वाज देयर? यस ऋषभ, करेक्ट, 6.69. अच्छे से याद करके रखिए, 2 पॉइंट नहीं है, 6.69. वेरी गुड एवरीवन.
नेक्स्ट इज द मोड ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो पोर्टल और ईमेल अगर कंबाइंड करें तो आपको याद होगा हाउ मच इन कॉम्बिनेशन वाज डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट 85.64, बट अगर इंडिविजुअली इफ वी लुक एट इट तो 56.1, एंड इन ईमेल हाउ मच? करेक्ट 29.6। बहुत बढ़िया। ओके तो फिजिकल लेटर में तो 14.36 होगा, राउंड फिगर 14.4 डाल देना। चलो नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रुप द टॉप वाज अरे पॉपुलेशन ग्रुप है, अभी कंप्लेनेंट नहीं आया है। इट्स नॉट कंप्लेनेंट, इट्स पॉपुलेशन ग्रुप। मेट्रो सिटीज, तो मेट्रो सिटीज एंड द बॉटम वाज रूरल एरियाज। सो इफ आई आस्क यू परसेंटेज, वो 0.77 वाला था, तो मेट्रो में कितना है? 45.77। व्हाट अबाउट द रूरल? बहुत बढ़िया 11.77। ओके लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। नाउ लेट्स कम टू कंप्लेनेंट वाइज। तो यस योर आंसर इज करेक्ट दैट हियर द इंडिविजुअल अकाउंट्स फॉर द मोस्ट। अब इंडिविजुअल का परसेंटेज कितना था? व्हाट वाज द परसेंटेज? एनीवन? इज करेक्ट मैथ्यू 85.92। और सीनियर सिटीजन्स का व्हाट वाज द केस फॉर सीनियर सिटीजन्स? 2.16। बहुत बढ़िया, गुड। सीनियर सिटीजन्स 2.16%। Next is regulated entity wise. So the topmost entity within the regulated entity, public sector banks, PSB, private sector banks, and banks overall. Percentage, what was the percentage? 83.78 is correct with respect to overall banks, but अगर public sector bank का है तो what was the percentage? 43.52, very good. Private sector में 31.43, बहुत बढ़िया। वो बार बार रिवाइज करोगे आ जाएगा ये। Now in terms of regulated entity category wise की nature of complaint क्या थी? So just tell me in terms of banks, तो banks के context में सबसे top most category क्या थी in terms of nature of complaint? Mobile banking है ना? In terms of let's say credit information companies, what was the topmost category? Loans and advances, ठीक है? Now what was the disposal rate overall? 97.99, बहुत बढ़िया। Cost of handling a particular complaint, $2041, good. Turnaround time, ये तो बहुत बार डिस्कस कर लिया, 33 days, बट व्हाट वाज द टर्न अराउंड टाइम इनिशियली 2019-20 में कितना था?
not 99, 95, yes. And what is the primary reason for Reserve Bank of India to make complaints as non-maintainable? What was the primary reason? No, FRC, first resort complaint तो second था, है ना? पहला था कि pending already with or already resolved with RBI Ombudsman scheme, ठीक है? So I hope you all, must have revised everything. अभी revision भी कर ही लिया. So apart from these percentages, जो टॉप मोस्ट कैटेगरीज है ना, उनके एब्सोल्यूट फिगर्स भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है? तो वट एवर मेंशन्ड इज इन दिस हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट दैट यू ऑल गाइज विल बी गेटिंग इन द कोर्स, ओके? उसमें से सारे डेटा पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेना, एक क्वेश्चन भी आप लोगों से मिस नहीं होगा इन द एग्जाम, ओके? सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. कल करंट अफेयर सेशन में मिलते हैं. थैंक यू.